हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग गेटलाइन फंक्शन के साथ करने वाले हैं। सो गेटलाइन फंक्शन समझने से पहले आपको मैं कोड करके दिखाता हूँ। सो इट इज सपोज स्ट्रिंग नेम एंड print one statement like enter your channel name and backslash n for next line, and then scene name, and then now print welcome to my channel and name. So now let's run the program. So enter your channel name. So our channel name is Kiri Code Scratch Tutorials. Now enter. So जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वेलकम टू माय चैनल हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था। सो हमने इनपुट में क्यूरी कोड स्क्रैच ट्यूटोरियल्स हमने लिया था, बट यहाँ पे हमारा केवल क्यूरी कोड ही प्रिंट हो रहा है। सो व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो गाइस, ये जो हमारा सीन है, ये क्या करता है, जैसे हमने क्यूरी कोड स्क्रैच ट्यूटोरियल्स हमने एज अ इनपुट लिया। सो क्यूरी कोड के बाद व्हाइट स्पेस दिखते ही वो बाकी चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है। तो व्हाइट स्पेस दिखते ही वो क्या करता है कि बाकी चीज़ों को एज अ डिफरेंट इनपुट वो कंसिडर करने लगता है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग क्यूरी कोड ओनली on console or monitor. So in order to print the entire string, or in order to print the entire line, or in order to print the string with the white spaces also, we can use getline function. So instead of using this line, we can use getline scene and name. And now let's run the program. Same query code scratch tutorials. So now as you can see, entire strings with white spaces are printing here. बफरिंग इन सी प्लस प्लस। सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बफर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, फ्लो ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। सो हमारा इनपुट डिवाइसेस होता है, फिर वो बफर के थ्रू प्रोसेस होता है, फिर वो बफर के थ्रू आउटपुट डिवाइसेस में आता है। सो ये बफरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सो मैं इसको आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ अभी। सो बफरिंग एग्जाम्पल, सो बफरिंग एग्जाम्पल in C++. So first, like, declare to integer, and then enter your first number and backslash n for next line, then scene of x, then enter your second number backslash n, and then scene of y. Now cout multiplication of two number is x into y. So now let's run the program. So enter first number. So there's two ways to run the program. So first, like, this is the first one. Enter first integer. Now enter second number. So we are getting multiplication of two number is 36. And the second way is like 12 and 4. We intentionally entered both the integer
when asking for only first integer, then both will go into the buffer. So this 12 read from buffer in variable x, and buffer already has an integer 4. So this 4 is read in variable y. So when we enter here, so here no need to write any integer in case of enter your second number. So because already we provided the second integer and stored in buffer, so we get our desired output. So I hope आपको ये समझ आया होगा buffer का concept. What is escape sequence in C++? So guys, हम लोग escape sequence को इन दो एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं. So यदि मैंने आपको बोला कि ये वेलकम टू क्यूरी कोड और ये प्रिंट बैकस्लैश ऑन कंसोल, ये दो सवाल आपको अपने कंसोल पे प्रिंट करवाना है. तो चलिए साथ में प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं. सो एज इंक्लूड iostream using namespace std int main and welcome to, so like c welcome to query code this. सो वेलकम टू क्यूरी कोड. चलिए इसको प्रिंट कर देखते हैं. सो लेट्स रन द प्रोग्राम. या सो गाइस, वी आर गेटिंग compiler error. What is the reason behind this? So here comes the concept of escape sequence. So guys, escape sequence, escape sequence character. So we have a different escape sequence character like a backslash n, जो कि हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं for a new line. This backslash and n together also form a escape sequence. So it's a escape sequence and backslash single quote. These also form a escape sequence for a single quote, and this backslash double quote. These also form a backslash double quote. These also form a escape sequence for a double quote, and this double backslash also form a escape sequence for backslash. So गाइस, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा, सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो हमारा वेलकम वेलकम टू क्यूरी कोड है, ये हमारा कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, बट वी आर गेटिंग द कंपाइलर एरर बिकॉज जो हमारा कंपाइलर है वो इस वाले स्ट्रिंग को एज अ सिंगल स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इट्स समथिंग यूजलेस. So that's why we are getting the compiler error. Now rewrite this code. So c and for double quote this backslash n, this is for a single quote, for double, and this is for backslash. So guys, यहाँ पे हम लोग c हमें यहाँ पे डबल कोट चाहिए. So for double quote we have to use this escape sequence like backslash double quote. So let's write, so welcome to welcome to. So here is a double quote. So for double quote escape sequence is backslash double quote. So query, again here double quote. So again the escape sequence, and now
Let's run the program. So guys, we are getting our desired output like welcome to query code. So our second example is print backslash on console. So cout print for backslash. So if we write like this on console and let's run the program. So print on console. So we are not getting this character on console because for a backslash we have to use this escape sequence double backslash. So right here double backslash, and now let's run the program. So guys, as you can see, we are getting our desired output. For double backslash, we are getting a single backslash on console. So this double backslash is a escape sequence character. So so guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So guys, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, so please like, share and subscribe my channel. So thank you guys.